Hello everyone, welcome to my channel. Topic for the day is human capital, and this is one of the very important concept of human resource management. So let's begin this human capital concept. So before discussing the concept of human capital, I would like to discuss the concept of capital. Now, capital is valuable property or a good which collectively represent the wealth of an individual or a business. And the human capital is the economic value of job, relevant skills, knowledge, ideas, energies and commitments. That means human capital is the economic value that an individual or the employee provides to the employer, and the assessment of this value related to the body of their skill, knowledge and experience that the employee possess. Now, human capital elements, the elements of human capital, we know there are three elements. First is known as intellectual capital, the another one is known as social capital, and the third one is known as emotional capital. So let's begin with this intellectual capital. What is that? Let's understand the concept. Okay, so intellectual capital, very important. It is consisting of two things. First is the knowledge, skill and expertise that all the members of the organization collectively possess. तो किसी भी organization में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी collective knowledge, skills और जो expertise है वो intellectual capital का part होती है. Secondly, the knowledge and expertise that may be embedded in or owned by the organization, including the patents, copyrights, any IP-based knowledge system or any specialized process of work. Like अगर आपकी organization की कोई USP है, like आपके पास आपका कोई competitive edge है in the processing और कोई कुछ ऐसा आपने knowledge system develop किया है IT based जो आपकी स्पेशलिटी है, आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है, so that is the part of your intellectual capital and it is very important to have these things in the organization. Now the second capital we know is known as social capital. जब हम social word use करते हैं that means हम यहाँ बात कर रहे हैं contacts की, networks की जो हमारे interpersonal behavior से related है. So this refers to the structure, quality and flexibility of the human relationship, the networks, both inside the organization and outside the organization. Inside the organization हम ये कैसे create करेंगे social capital? So through job rotation, through long-term employment, joint training and other mechanisms. मैं यहाँ पे एक example दूँगी आपको human capital का, like हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड and even the State Bank of India, तो SBI है या HUL है, they have historically built outstanding social capital in the respective organizations with the help of this internal job rotation system, long-term employment, joint training and other mechanisms. यहाँ पर external relationships के through भी हम social capital को develop कर सकते हैं, like with these customers and with the suppliers. So हमारी कितनी अच्छी networking है, कितना smooth हमारा उनके साथ communication है और हमारी कितना strong relationship building है with all the customers of the organization and the suppliers of the organization. तो ये social capital जो कि networking आजकल हम सब जानते हैं कि networking का क्या ज़माना है और everybody who is having great social capital in terms of his networking inside and outside the organization may achieve great success in the organization. Now moving towards the third element of the human capital, that is known as emotional capital. Again, the very important element. In today's organization, this emotional capital is more important even than the intellectual capital and the social capital. तो चाहे आपके जो interpersonal relationship से हमने जो network building की है और या हमारी जो knowledge, skills जो कि हमारी intellectual capital का part है, उनके बाद भी emotional capital is the
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन शुड हैव। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशलाइज नॉलेज एंड अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट इनफ टू गेट थिंग्स डन। तो कितना भी हम मास्टर हो किसी चीज में, कितनी भी हमें नॉलेज हो या हमारी नेटवर्किंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट इफ वी आर नॉट सेल्फ confident or we are not courageous enough to perform any task, we cannot be successful. तो यहाँ पर one individual needs self confidence, courage, resilience to convert their knowledge and relationships into effective action. तो इमोशनल कैपिटल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल और सोशल कैपिटल को स्ट्रेंथन करती है। अगर कोई इंडिविजुअल इन तीनों कैपिटल्स का, इन तीनों एलिमेंट्स का मिक्स है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन nowadays requires high internal energy and an environment of pride, trust and openness to create momentum for speed and action in highly evolving markets. So जब हम इस तरह के मार्केट में डील कर रहे होते हैं, या हमारे को इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉइज एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, ओपन फीडबैक सिस्टम हो और एनवायरनमेंट बहुत कंजीनियल हो, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर हमें मिक्स ऑफ दीज थ्री ह्यूमन कैपिटल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। केवल नॉलेज होने से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी कि उसके पास बहुत सारे कॉपीराइट्स हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम नहीं हो पाएंगे। या हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम नहीं होंगे। हर इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा टू परफॉर्म द टास्क। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए। Now the challenge for the individuals and organization is to get an ideal mix of these, three elements of human capital. And these three elements of human capital are highly interrelated. Here I have told you that social capital helps develop intellectual capital both by accessing knowledge and skills which is necessary outside the company and by sharing and linking and integrating the knowledge within the company. Similarly, strong and supportive relationships also help in building the courage and grit necessary for entrepreneurship and action taking. And in turn, action leads to knowledge. We learn by doing. So, ये तीनों एलिमेंट्स का मिक्स हमें चाहिए because these three elements of human capital are highly interrelated to each other. And as an individual, you have to take responsibility for your own career. Instead of passively relying on others to manage it for you, in a fast changing world, all the elements of human capital erode rapidly. Like knowledge becomes obsolete unless it is updated. Relationships weaken unless they are continuously refreshed, and the courage to act diminishes unless it is regularly exercised. So, with the help of this particular statement, you can understand that all the three elements, intellectual capital, social capital, and emotional capital, they are highly interrelated with each other. And this need for both individual and organization to compete on human capital can lead to tensions and conflicts of interest. अब यहाँ पर जब हम तीनों एलिमेंट्स को पजेस करने के लिए काम करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक इंडिविजुअल की भी नीड है टू पजेस दीज थ्री एलिमेंट्स एंड एक ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड है टू पजेस ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यहाँ पे compete कर रहे हैं to have the three elements of human capital, so at times it can lead to tension and conflicts of interest because individual को अगर social capital build करनी है, कि इमोशनल कैपिटल बिल्ड करनी है या इंटेलेक्चुअल कैपिटल बिल्ड करनी है, तो मे बी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में उतना रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन मे क्रिएट ऑब्स्टेकल्स
side by side, if organization is working to have all three elements, maybe individual के जो personal objectives है वो कहीं ना कहीं hamper हो रहे हैं. तो ये जो hamper हो रहे हैं एक दूसरे के objectives एक साथ नहीं आ पा रहे, तो this can lead to so many tension and conflicts of interest among the individuals and with the organizations as well. एक जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता था, अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे नीड टू सेक्रीफाइस देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर नीड्स फॉर बिल्डिंग पर्सनल ह्यूमन कैपिटल टू मीट द कंपनी नीड्स. हमें क्या होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल एस्पिरेशंस है, वो कई बार सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, विच इज नॉट गिविंग सेटिस्फैक्शन टू एनी इंडिविजुअल एट पर्सनल लेवल. तो इसको अगर हमें डिस्करेज करना है या इसको ओवरकम करना है, तो ये हम कर सकते हैं वॉलंटियर मॉडल के थ्रू. वॉलंटियर मॉडल जो ह्यूमन कैपिटल में हम यहाँ बात करते हैं, वॉलंटियर मॉडल इज लाइक एमबीओ, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. तो वहां पर क्या है, इट इज in volunteer model, interest of both the parties, the employee and the employer, they have to be met. And in that case, both will be happy. Employee will be, focusing on the personal objectives, including the organizational objectives, and the organization is also in a position to achieve the organizational objectives with the help of this volunteer model or the mutual understanding of goals by both the parties. So this is the concept of human capital, wherein we have discussed the three elements of this, and we have discussed the relationship of these three elements like intellectual capital, social capital and emotional capital, how they are very very important for one individual and for the organization, and even how they are interrelated to each other. So if you are having only one element of human capital, the purpose will not be solved, the objectives will not be met. We have to have the three elements of human capital in the right mix. So that's all about this human capital. In this slide, I have given some references of this particular topic. The books of 3 books from Gary Dessler, Ashudhapa and Ellen Prasad. So I hope you all have understood the concept of human capital, and your queries and the feedback is most welcome. आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी वास्ट. अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम जल्दी पढ़ें पाठशाला में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए. सो हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.